तो सपोज I take a potential which is phi is equal to, एक पोटेंशियल गिवन है and that is phi is equal to axy. Okay, find the सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। मुझे तो सही दिख रहा है। शायद मेरी साइड से कुछ नेटवर्क इशू होगा। और लोग बताओ भाई। अब ठीक है सर, वो पहले तो ब्लर था थोड़ा सा। है सर अब क्लियर है, पहले ब्लर था। सर पहले थोड़ा सा था ब्लर। नहीं, आई थिंक वो तो मैंने जस्ट ये सेट किया, अदरवाइज दिख रहा था स्क्रीन पे मुझे तो। ओके, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई, ठीक है। ये पोटेंशियल गिवन है एंड वी हैव टू राइट द क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द गिवन पोटेंशियल। Find the electric field for the given potential. Also draw the equipotential surface. Also draw the equipotential surface. Okay. So let's suppose A is given to be positive. So how we plot it? For equipotential surface, we will have to take some fixed value of the potential. Equipotential means same potential. So let us take it phi naught potential is equal to AXY. Now we have to plot this equation. So what is this equation? It is phi naught by A into X, correct? यही तो है equation. यस सर। तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सारा प्लॉट at a constant potential. So different constant potentials we have to plot it. So let me show you one. Suppose I take phi naught to be positive. So A is also positive and X is also positive in this quadrant. So how you will get the value? You will get it like this, yes or no? The potential. यस सर। You change the value of potential as some positive potential, you will get another one like this. You change the value of potential, you will get another one like this. You change the value of potential, you will get another equipotential surface like this. So suppose this is 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, ऐसे होता जाएगा. Suppose I am taking the value of potential at so you can imagine that, suppose let us take A is equal to 1 and then I will start taking it as 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. So all these potentials are giving equipotential surface. That means on this value of points, the potential will remain constant. ये बात समझ आ रही है? यस सर। सभी लोग बताओ देख के।
So these are equipotential surfaces, right? I have drawn only in first quadrant right now. And if I take, so this is when the value of potential is positive, like this, these are the values. And on the same value, if you go to plot the minus x, how you will get? You will get it like this, yes or no? So these are the values that you will get for -1, -2, -3 volts. पहले ये समझो, देखो समझ आता है? I'm sorry, अभी positive potential ही है. X is negative. The value of X is I am taking to be negative. So for these potentials, you are getting this set of equipotential surfaces. And a very important thing is that what is the direction of electric field? So potential is increasing in this direction. So what is the direction of electric field? Opposite. Yes. It is perpendicular to the equipotential surfaces in the decreasing direction of the potential. And here also perpendicular to the equipotential surface and in the decreasing direction. Yes or no? ये देखो समझ आ रहा है? So here when you will try to draw the field, you have to draw it perpendicular, so it will not be always straight line. बीच वाली straight line होगी, फिर ये थोड़ी curved fields होंगी, right? It will be curved like this, perpendicular. You have to draw it perpendicular. You have to draw it perpendicular like this. So this will be the direction of electric field, and similarly like here it will be like this and it will be like this. This will be the direction of electric field. So according to the given potential, it seems like कि origin पे कोई negative charge रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, और सारी field lines उसकी तरफ जा रही हैं. It appears some negative charge is kept on the origin, and electric field lines will be this. So you can draw electric field lines in this way. You can draw electric field lines using equipotential surface. Correct? ये clarity आ रही है सबको? So like ये वाला potential draw करने के लिए क्या किया गया है? Y is equal to 4 by X. इसको plot कर लिया गया. Because it is 4 volt. And the value of X is positive, so you are getting it like this. Now similarly, negative potentials can also be taken. पहले यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं फटाफट आगे बताता हूँ. सर ये जो y is equals to 4/x लिखा है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 ली है. ये देखो, ये कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो जरा. ओके ओके सर, ओके. अच्छे क्वेश्चंस पूछो भाई. ये तो ये लिखा हुआ है a is equal to 1. सर दोनों में डायरेक्शन इस तरफ ही होगी. सर एक बार डायरेक्शन और बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की. ये दोनों में सेम साइड. आप बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इन विच डायरेक्शन आई हैव टोल्ड यू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी? कुछ इसके बारे में बात हुई है पहले? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ. डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पोटेंशियल कितना है इस पूरे कर्व पे? 4. इस पूरे कर्व पे 3 to 1 डिक्रीज हो रहा है. तो इस तरफ बनाया है, ये सब परपेंडिकुलर है, और इस तरफ डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल. ओके सर. ये वैसा ही था जैसे दो प्लेट मैंने बना के आपको दिखाया था, अगर आप याद करो कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या था? V प्लस था, यहाँ V माइनस था,
और फील्ड किधर आ जाती थी, इधर आई थी या नहीं आई थी, इन द केस Yes, ऑफ sir. टू पैरेलल शीट्स which is known as capacitor. So field की direction is this side and potential is decreasing in this side. ऐसे ये वाला देखो, देखिए भाई डायरेक्शन। सर अगर हम इसे पीछे से देखने के बजाय आगे से देखें, जैसे 1 2 3, ये तो इंक्रीज हो रहा है ना। सॉरी क्या? अ, जैसे आपने पीछे से नंबरिंग किया, जैसे 4 3 2, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर हम आगे से देखें तो ये इंक्रीज वे में जा रही है ना डायरेक्शन। ये हाँ जी सर। इधर से ऐसे ऐसे कह रहे हो आप? हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 हाँ 3। बिल्कुल, ऑब्वियसली इस पे पोटेंशियल 1 है, इस पे पोटेंशियल 2 है, इस पे हाँ पोटेंशियल 3 है, इस पे पोटेंशियल तो ये 4 है। इंक्रीज हो रही है, तो सर ये डायरेक्शन फिर बाहर की तरफ में होगी। तो ये इंक्रीज हो रही है, इसीलिए तो डायरेक्शन फील्ड की ऐसे बनाया है। अगर मैं ऐसे बना देता तो फील्ड, तो पोटेंशियल के इंक्रीजिंग डायरेक्शन विच इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप बिल्कुल सिंपल ऐसे समझो, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। देखो शिवानी, हाँ जी सर। इसको बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो ये इन लाइंस पे पोटेंशियल है। ओके, इस पूरे लाइन पे यही पोटेंशियल है। ऑलराइट, दिस इज द पोटेंशियल ऑन दिस लाइन। तो हाँ जी। मैं इसके परपेंडिकुलर बता देता हूं, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके शिवानी, हाँ जी, ओके सर। दिस इज द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम बताओ मुझे कि मैं एरो इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, टूवर्ड्स राइट लगाऊं या टूवर्ड्स, तो मुझे तुम ये बताओ कि फील्ड ए टू बी होगी या बी टू ए होगी? सर डिक्रीज होगी तो फिर बी टू ए। बी टू ए, वेरी गुड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग द मोस्ट। हाँ जी सर। क्लियर? ओके सर, क्लियर। अब यह जरा इस साइड ड्रॉ करते हैं। अब आई विल टेक नेक्स्ट केस। हियर यू हैव टेकन पोटेंशियल्स पॉजिटिव, now let us take the potential negative, because you can make any equipotential surface, you can take any value of potential, right? So if I take negative value of potential, for example -1 volt, -2 volt, then what will happen? ध्यान से देखो। So if I take negative value, suppose I take -4 volt, so it will become -4 by x. Yes or no? And then if you take positive values of x, you will get a curve which is here, like this. So these are the values which are -1 volt, -2 volt, -3 volt, like this. And similarly, when you take negative values, you will get it here. So this is again -1 volt, -2 volt, -3 volt. अब बताओ शिवानी, ये होगी फील्ड की डायरेक्शन, राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, हाँ जी सर। अब ये बताओ मुझे कि मैं एरो बाहर की तरफ लगाऊं या ओरिजिन की तरफ लगाऊं? सर बाहर की तरफ। पोटेंशियल किधर घट रहा है, बताओ शिवानी? सर माइनस ओरिजिन की तरफ। -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? बाहर की बाहर की तरफ। नहीं, बताने दो शिवानी। सर बाहर की तरफ लगेगा। -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? -2 बड़ा है सर, अंदर की ओर आएगी डायरेक्शन। -2 बड़ा है।
मैं दो पोटेंशियल लिख रहा हूं, V1 इज इक्वल टू -3 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू -2 वोल्ट। Which सर one is -2। -2 is greater, right? हाँ जी सर। तो जब -2 बड़ा है और ये छोटा है तो पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल वाज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन, सो -3 and -2, so it will be in which direction? Away from origin. अगर मैं Outward. ऐसे बना दूं, so it is in the decreasing ना? सर ओरिजिन की तरफ आएगा क्योंकि मतलब डिक्रीज हो रही है ये। ठीक है, और सिमिलरली ऑन दिस साइड, सो इस तरफ लगातार पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा ना, तो इसलिए फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, Okay. so because V1 is Less than V2. less than V2। तो यहां तक क्लियर है सारा? यस सर। तो इस रीजन में फील्ड लाइंस ऐसी जाती हुई दिख रही हैं, इस रीजन में भी फील्ड लाइंस आर appearing to be going towards the origin, but if you come to this region, so if you keep a point plus q here, the charge will come this side. If you put point plus q charge here, the charge will come in this direction, but if you put plus q charge here, it will go this direction. If you put plus q charge here, it will go this direction. ये है सारा। तो ये तो पता है ना कि नेगेटिव में नंबर्स जैसे से बड़े होते हैं और छोटे होते जाते हैं, यस और नो? यस सर। अगर Yes, sir. आपके अकाउंट में -2000 है तो आप अमीर हो, या -3000 है तो आप अमीर हो? -2000। बस, ठीक है, वेरी गुड। और एक बार चार्ज प्लेस जैसे आपने कहा कि यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, वो अरे बताइए। भाई अपने आप भी प्रोसेस करो, इक्वल्स टू QA। पहले परमप्रीत अपने से क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन अपने आप से कि अगर एक चार्ज कहीं रखते हैं तो उस पे फोर्स का क्या फॉर्मूला है? पूछा? बोलो बोलो भाई, फिर फटाफट आंसर दिया करो। हेलो, यस सर। हाँ बताओ भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ फोर्स ऑन अ चार्ज? QE, यस सर। QE, very good. So if you put a Q charge here, positive Q charge, so F is equal to QE, charge will go in which direction? In the direction of electric field. Very good. So that's why I said if you put plus Q charge here, it will go in this direction. If you put plus Q charge here, it will go in this direction. If you put plus Q charge here, it will come towards origin. If you put plus Q charge here, it will come towards origin. Okay sir। Good. तो ये मिटा दूं सारा? तो ये सारे अलग अलग पोटेंशियल्स लेके, हाँ सर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस ये सर -x जब हम लेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए ना, -3 वोल्ट में। तो यहाँ पे ले लो ना तुम, तुम्हें प्लॉट करना है y इज इक्वल टू, बताओ क्या ले लूं? सर सपोज -x ही ले लेते हैं, -1/x। तो यहाँ -1/x क्यों बोल रहे हो जब प्लस पोटेंशियल है? तो यहाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे ना, नेगेटिव बार नेगेटिव तुम x कुछ पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो बताओ, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है यहाँ? +1 वोल्ट। +1 है, और फॉर्मूला क्या है?
y नॉट बाई x 1 by x, तो हो जाएगा 1 by x if you take 1 volt. Okay, it will become yes sir 1. Now the value of x is negative in this side because these values are, -1 -2 -3 so if you plot it, you will get -1 -2 -3. So when Yes, you are sir. very close to this, that means the value of x is very small but negative, so you will get very large and negative number. okay ठीक है? sir sir अरे ये तो 1 by x का ग्राफ है यार, 1 by x का ग्राफ है. अगर x नेगेटिव है तो इस साइड का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंग 1 by x का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना. yes sir ओके, तो सर ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वोल्ट नेगेटिव में ही रहेगी। रहेगी नहीं. यू हैव टेकन, आप समझ नहीं पा रहे हो. एक बार आपने पॉजिटिव पोटेंशियल्स लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है ना. हाँ जी हाँ, सर। तो आपने मान लो 1 वोल्ट ले लिया, तो 1 वोल्ट वाला ये सरफेस भी 1 वोल्ट है और ये सरफेस भी 1 वोल्ट है. भाई 1 वोल्ट लेने के बाद x और y दोनों, x प्लस x और माइनस x दोनों प्लॉट करोगे ना. हाँ जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को जरा आपको दिखाता हूं. यू कैन यूज इट बाद में सर भी. हाँ जी, जी सर. सर ये बोलो मैं एक बार, ये जो आपने सीधा y इक्वल्स टू 4/x लिया है, इसमें हम सिर्फ y और x की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर रहे हैं हम लोग. एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर एक बार सर तो नेगेटिव नेगेटिव, है ना सर? क्या क्या, एक बार फिर से बोलो. जैसे आपने ये y इज इक्वल्स टू 4/x जो लिखा है, हाँ, इसमें सिंपल हम लोग जो पॉसिबिलिटीज है वो रख रहे हैं सर. एक बार x, पॉसिबिलिटी, अरे ये तो सिंपल हाई स्कूल हाँ ज्योमेट्री सर है कि वही अगर चीज सर. अगर तुम ऐसे एक ये बना लो, ऐसे बना लो, हाई स्कूल में बनाते एक्स थे ना. पॉजिटिव, हाँ तो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव, वाई x है, मैं यहाँ नेगेटिव। यही y तो बता है, रहा हूँ सर. तो हाँ x की अलग अलग वैल्यूज लोगे और y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी. हाँ सर, वो सब लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, मैं यही तो बता रहा था कि आपने सर उसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो ली है. अरे कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है, तुम टेंशन मत लो. कंफ्यूज होना बुरा नहीं है. क्यों भाई? जी सर. फाइनली समझ लेना इंपॉर्टेंट है. चलो सब लोग ध्यान से देखो, दिखने लगा. डेस्मोस दिख रहा है। हाँ जी। अब सबसे पहले कौन सी वैल्यू लूं बताओ? y इज इक्वल टू क्या पोटेंशियल लूं? 4 ले लूं? हाँ सर, 4/x। 4 हाँ जी सर। 4 बाय x. देखो आ गया ना दोनों. Because obviously you will take the positive values of x also and negative also na to make the graph. हाँ जी सर। Then take 3 by x. Yes. Then take 2 by x. Yes. Then take 1 by x. ये set of equipotential surfaces बन गए for positive potentials. Then take minus 4 by x. Then take minus 3 by x. Then take minus 2 by x. Then take minus 1 by x. देखो हो गया. तो understood everybody? यस सर। Very good. So you can also try by yourself. Okay. तो एक
Don't forget the name. Equipotential surface means it will be a surface. 2D surface, 3D surface, but it will be a what? It will be a Equipotential surface. surface. On whole of that surface, you will get single potential. That means the value of potential will not change. Okay. So let me give you another example. So we have taken one profile of potential, and I have given you two profiles, na? Sphere. Sphere also I have told. Yes, sir. Potential for us at a point on scale. Hmm. So now let me discuss a little bit about the energy that I have told you already, that potential and energies are related, right? V potential difference between 2 points, VA minus VB, is equal to W work done by For charge. competition. Work done by charge. So if you want to calculate the work, that means the energy of that configuration, so it will be Q naught VA minus VB. Q naught VA minus VB. That will be the energy. So let us calculate the energy of configuration. मान लो एक question given है that suppose 4 charges are arranged like this, and what is the energy of such a configuration? Or let us take it positive, all the charges to be positive, and tell me what is the energy stored in this configuration. What is the question? What is energy stored in this configuration? What is the energy stored in this configuration? ठीक है? So how you calculate it? You start bringing one single charge from infinity to a point where they are located, and calculate the work done in doing this, and then add all the work. That will give you the energy of the configuration. So suppose सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, 2, 3 and 4. So the energy stored will be equal to, सबसे पहले ये चार्ज लेकर आते हैं when nothing is there. So when you bring this charge, there is no other potential. So that's why energy to bring this charge will be 0. Then you bring this charge, then the energy to bring this charge will be 1 upon 4 pi epsilon naught q square by A. Then you bring this charge. Now, when you bring this charge, these two charges are already present, and this distance is A root 2. So you will have the work done is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square by A plus 1 upon 4 pi epsilon naught q square by A root 2. Then you bring this charge when all three potential due to all three charges are present. So that will be 1 upon 4 pi epsilon naught q square by A
plus 1 upon 4 pi epsilon naught q square by a root 2 plus 1 upon 4 pi epsilon naught q square by a. So this is the to bring first charge, this is to bring second charge, this is to bring third charge, and this is to bring fourth charge. So this is how you calculate. So basically energy is stored in the configuration is calculated by how much work is to be done to bring these charges together. इनको इकट्ठा करने में, इनको बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि उनको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन. सो आई हैव यूज्ड हियर दैट अगर सपोज तुम ये चार्ज लेकर आए हो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू Q इनटू V. ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. एक बार ध्यान से देखना. इज इट ओके? We have calculated fields due to so many things that we can easily calculate the value of potential. So अब जरा वो भी करते हैं. So हम लोगों को field due to infinite wire पता है ना? Yes. If lambda is the charge density of an infinite wire, then what is the field here? याद है? सर लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E is equal to lambda by 2 एप्सिलॉन नॉट 2 pi. एप्सिलॉन नॉट आर Pi नहीं होगा. सर होगा. Lambda upon 2 pi epsilon naught r. So if I want to calculate potential difference between 2 points, suppose this is the potential A and B. So suppose I want to calculate, and this distance is RA and this distance is RB. Okay? You want to calculate potential difference between these 2 points. So how you will write? VA minus VB. याद है formula? Minus integral RB to RA E bar DRD. dot dr E bar. dot dr. This is the potential difference. And
This will become, अपने आप भी कोशिश करो, minus RB to RA, E will be lambda by 4 pi epsilon naught, sorry, lambda by 2 pi epsilon naught R, and it is R cap in the R cap direction dot dr. It will be like this. So इन दोनों का dot product dr ही हो जाएगा because they are in same direction. So it will become minus lambda by 2 pi epsilon naught and dr by r integral rb to ra. So what it will become? Minus lambda by 2 pi epsilon naught. This will become log of r. So log of ra by rb. And if you take minus sign inside, it will become lambda by 2 pi epsilon naught ln of rb by ra. This will become the potential difference between VA minus VB. This quantity will be positive, so that's why VA is greater than VB. सर हम्म अगर हम ए से बी जाएं या बी से ए जाएं तो माइनस साइन का सर फर्क आएगा? किस चीज को कैलकुलेट करने में? जैसे हम पोटेंशियल फाइंड करें ए से बी या बी से ए, तो ध्यान से सोचो इस बात को। यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो जी यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ कम है। जी तो अगर ऐसे मन में नंबर ले लिया करोगे, ऐसा कंफ्यूजन हो, मान लो यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है। जी सर, अब तुम देख लो क्या पूछ रहे हो। अगर ठीक VA माइनस VB पूछ रहे हो तो 2 वोल्ट हो जाएगा, अगर VB माइनस VA पूछ रहे हो तो माइनस 2 वोल्ट हो माइनस 2 जाएगा। वोल्ट, ठीक है सर। Is this clear? होमवर्क में लिखना, draw equipotential surface for phi is equal to a x square minus y square. Draw equipotential surface for phi is equal to a x square minus y square. जिस तरीके से we can calculate potential difference between any 2 points. Why? Because we know the field, then we can calculate the potential using this formula, right? Why we can calculate? Because we know the field. इलेक्ट्रिक फील्ड। The electric field पता है, तो we can calculate the electric potential. Okay. एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखो जरा। The electric field capital E for a system of charges is given by E is equal to 1 by Z square 8 XYZ x cap
plus 4 x square z y cap minus 4 x square y z cap. Okay, this is the field profile, electric field. E is equal to 1 by z square 8 xyz x cap plus 4 x square z y cap minus 4 x square y z cap. This is the electric field. Find the differential amount of work done. Find the differential amount of work done in moving 6 nanocoulomb charge at a distance 2 micrometer कितने डिस्टेंस चलना है 2 micrometer starting at point P, which is this 2 minus 2 3, and proceeding in the direction dl is equal to minus 6 by 7 x cap plus 3 by 7 y cap plus 2 by 7 z cap. So it is obvious that small work done will be force into small displacement. This is small work done, yes or no? And total work done that you need to calculate will be given by integral f dot dr. And obviously f will be given by q into electric field. This is the whole idea. Question note कर लिया सबने अच्छे से ना? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Nandana? Yes, sir. You have noted down the Yes, sir. question? Are you understanding everything? Yes, sir. Okay. So we have to do this. So please understand that they want us to move 2 micrometer. How much we have to move? 2 micrometer. But in the direction this. That means the direction is dl vector. So we have to just move 2 micrometer with dl cap as a unit vector, because this will tell us the direction in which we have to move. And dl cap is obviously dl by mod of dl, which is minus 6 by 7 x cap plus 3 by 7 y cap plus 2 by 7 z cap upon, what will be the modulus of this? Under root 6 by 7 square plus 3 by 7 square plus 2 by 7 square. Is it okay? ये सबको समझ आ रहा है? What is the unit vector of a vector? Vector by mod of this. Vector by mod of vector. So हमको 2 माइक्रोमीटर मूव करना है बट इन द डायरेक्शन डीएल कैप, तो इसलिए मुझे डीएल कैप की जरूरत है. So this will be the distance that we will be moving. तो ये बताओ जरा ये वैल्यू कितनी आ रही?
DL cap. डीएल ही आ रही है सर, Sorry. डीएल ही आएगी, नीचे तो 1 हो गया। नीचे है 36 plus means it was already a unit vector, right? यस सर, यस सर। It was already a unit vector given. So, but we had to check, na? हमें तो नहीं पता ना. We have to check that it was a unit vector. So it will be this. This is the unit vector. And we have to move this much of distance 2 micrometer in this direction. And the field was given. So let us calculate now work done. Can I erase this much? This is clear to everybody? This part is okay? So let us write work done. So if you move 2 micrometer in that direction, what will be your new coordinates? Suppose you move 2 minus 2 and 3 in that direction. So let us write that. What will be that? That will be what? बताओ भाई. 2 minus 6 by 7 x cap plus minus So if I 2. write it like this was the initial point. 2 minus 2 and 3. You moved in this direction. And what you got is after traveling 2 dl distance. So what will be that? dl कितना आ रहा था? Minus 6 by 7 x cap Minus 6 by 7 x cap plus 3 by 7 y cap plus 3 by 7 y cap plus 2 by 7 z cap. 2 by 7 z cap. Z cap. This was unit vector, na? Yes. So after you travel, what will be the new points? So जो distance का formula है, suppose I write this as P and suppose this is Q or something, Q. So suppose this is X, Y, Z. It is like this. So what will be X, Y, Z? You can write a new vector. minus x1 2 y2 minus minus y1. 6 by 7 plus minus 2 plus 3 by 7 y cap. हाँ. So X minus 2 will be equal to minus 12 by 7. Okay. Y plus 2 is equal to कितना हो जाएगा? 6 by 7. And Z minus 3 is equal to 4 by 7. So यहाँ से get the value of X, Y, Z. So X will be, calculate it. It will be 2 by 7 and Y will be minus 8 by 7 and Z is 25 by 7. यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो. तो we got this point. This point is 2 by 7, comma, minus 8 by 7, comma, 25 by 7. So from here, we need to go to this point to calculate the work done. Sir, can you explain once again how x minus 2 is minus 12 by 7 and once again I didn't get it. Just X
suppose this is x, y, z, and this is your new point. Sorry, 2 Okay. comma minus 2 comma 3, and this is your new point. Okay. So just the distance is 2 unit, na? Okay. 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 So Okay. x minus 2 will be 2 unit of this vector. Okay. Okay. So minus 12 by 7. Okay, sir. Okay. So no need of this now. Now get the work done. So work done will be charge, which is 6 nanocoulomb, integral. कहाँ से कहाँ? 2 minus minus 2 to 3, 2 by 7 minus 8 by 7, 25 by 7. 7 minus 8 by 7 and 25 by 7 into 1 by z square eight x y z x cap plus 4 x square z y cap minus 4 x square y z cap डॉट किस डायरेक्शन में जाना है उसका डी आर लिख लो. What will be that? EL. dx D- x cap dx x cap plus dy y cap dy y cap plus dz z cap. z cap. तो dr की वैल्यू लिख दी. Now what you will get? अभी मैंने यूनिट्स को अच्छे से नहीं लिखा इसलिए I am writing nano coulomb also with together. This 1 by z square 8 x y z dx plus 4 x square z dy plus 4 x square y dz. This is the situation after taking the dot product. माइनस आएगा ना, -4x² y है ना, z कैप. Minus. Yes. This is the situation. अब एक बड़ा ही अच्छी चीज आपको सीखनी है यहाँ पे, because when you are moving, everything is changing together. So how you will integrate? That is the problem. So please see what you will do. Just first of all, move along x, then move along y, then move along z, like this. Suppose you are at a point, this is x, y, z. You move along x only, then move along y only, then move along z only. You can do this now. Suppose you want to go from here to here. So you can, sorry, from here to here. So you can go like this because vector sum will be same. Suppose you want to go, you can go along x first, then along y, and then along z to reach this point. From here to here. Yes or no? Yes, sir. So that is the thing what we are going to do. Understand this carefully. So what you will do is 6
nanocoulomb integral. First of all, I will move along x. So that means x will change. So what was the point? Can you tell? 2 to 2 by minus 7. 2, 3. 2 to 2 minus 2, 3. 2 minus 2 3 hmm, 2 2 2 by 7 by 7 minus 8 by minus 7. 8 by 7 and 25 by 7. 25 by 7. And whatever is there here, put it as dx. Okay. So what you have to do is when you are moving towards x, don't change the other things. So put here minus 2 and 3. Because while you are changing x, y and z are constant. That's why they will become 0. dy and dz will become 0. Now in the second term, it is 2 by 7 minus 2 and 3. From here, 2. 2 by 7 Minus 8 8 and by 7 3 will be constant and it will be 8 by 7 minus 8 by 7. minus 8 by 7, and here it will be this into dy. And plus integral 2 by 7 minus 8 by 7, and 3 will be changed to 25. Divided by 7. 25 by 7. So sorry, from 3 Sir, to वो 3 to 25 by 7. 3 to 25 by 7, 2 by 7 minus 8 by 7 and 25 by 7, and here you will have this into dz. So dz. this will be the answer. इसको अच्छे से समझ लो कि what we have done is, इसको अगर ऐसे लिखें तो we started from 2 to 2 minus 2 and 3. So first of all I wrote 2 by 7 minus 2 and 3. Then I wrote 2 by 7 minus 8 by 7 and 3. And then I wrote 2 by 7 minus 8 by 7 and 25 by 7. So here only x changed, here only y changed, and here only z changed. So इससे आपका इंटीग्रेशन एक बार में सिर्फ एक ही करना पड़ेगा. And when you do it, you will try it and calculate the value. You will find the answer to be 63.31 into 10 to the power minus 15 joule. This will be the answer. Okay. देखो समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? This everybody understood now how we are moving? Yes, sir. So this question has been asked many times. Just in this question, I have taken the numbers to be lit. I have taken this from a textbook. So when they give very small numbers. So you can do it very, very quickly. But concept is same. Concept remains same.
Okay. So any question you can take and calculate the सर put. Hmm. आंसर कितना आ रहा है सर वो आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन नहीं वो लिखा है लिख दिया था मैंने ना 60 कितना लिखा 63.31 into 10 raised to minus 15 joule. सर ये व्हाट 62.135 into 10 raised to minus 14 40 14 चेक करना फिर कहाँ पे यस सर So in all the problems where we have calculated electric field, we can calculate potential difference, right? Write it. In all problems where we have calculated electric field, we can calculate potential difference using the same profile of electric field. Just you will have to integrate it to get the electric potential. ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन करते हैं that ये पहले किया हुआ है. This is some infinite cylinder consisting of charge density plus rho, and then outside is this hollow, and then outside is minus sigma charge density. And this point is O, and this point is, so actually this is radius small a, and this is radius small b, and you need to calculate VO minus VB is equal to question mark. So this is VB. Okay, and it is plus rho and minus rho are such that they make each other electrically neutral. I mean, जितना चार्ज बाहर वाले शेल वाले सिलेंडर पे है, उतना ही चार्ज अंदर वाले सॉलिड सिलेंडर पे. तो इसका मतलब बाहर कोई फील्ड नहीं होगी. There will no field outside. So how to get it? Question understood, everybody? These are long cylinders. This one is solid. This one is hollow. Charge densities are given. So how you will calculate it? Tell me. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे R लेस देन A का, फिर A to B का. मतलब So basically, you are interested in writing VO minus VB is equal to minus integral RO, which is 0 because this will be the point. Huh? So distance from this point to this point will be what? 0. Let me write it RO, and then to R, so RB to RO and E dot dr. This is how we write. बोलो भाई, ऐसे ही तो लिखते हो potential difference. So it will become minus
आर बी कितना है? बी, दिस इज बी ना, and RO is 0, and so from B to 0, from B to 0 you will have actually B to A having a different field, say E1, and then B to 0 will have different field, that is E2. That is the problem. There is a discontinuity in electric field. I mean the difference of profiles. यहाँ पे field की profile अलग है, तो तुम जब यहाँ से चलोगे यहाँ के लिए, तो पहले यहाँ से यहाँ लिखोगे field कुछ और है, और यहाँ से यहाँ field कुछ और। सर जो नेक्स्ट है उसमें A to 0 होना चाहिए ना? B to A to 0, sorry, B to A and A to 0, right? यस तो सर. जब ये लिखोगे तो it will become minus. What is the profile of electric field outside? It is integral B to A rho r by 2 epsilon naught. सिलेंडर है ना, स्फीयर होता तो रो r by 3 epsilon naught. नहीं, आउटसाइड लिखना है, सॉरी, आउटसाइड विल बी लैम्डा बाई, कितना पढ़ा हुआ है आपने? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पढ़ा हुआ है? बोलो भाई. So how to convert it into rho? So you can convert lambda na. Lambda is charge into length, and that is converted into rho, which is कितना होगा? It is done like this. Suppose you want to write a charge dq, so it is lambda dl, and also it is rho d tau. Correct? दोनों equal है. So q is equal to lambda into L हो जाएगा, is equal to rho into volume कितना होगा? Area of cross section into L. So L and L will cancel. So lambda can be replaced by rho into A. So it can be replaced by rho into area of cross section, which is pi A square by 2 pi epsilon naught R. So this will cancel. So it will become rho A square by 2 epsilon naught R. This will become the formula. So it will become rho A square by 2 epsilon naught R dr plus integral A to 0. What will be field inside? Rho r by 2 Rho epsilon. r by 2 epsilon naught and dr. Just integrate this. This will be the answer. Check करो जरा कितना आ रहा है. VA minus. Sir, VA minus VB is equal to minus integration of RA minus RB ना, means first point का है उसका वेक्टर पहले लेंगे ना, लोअर लिमिट. ये और ये हमेशा सेम रहता है. फॉर्मूला ओपन करके देखो आप. हाँ सर, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि VA minus VB is equal to minus integration of RA minus RB. नो 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 नो, Okay, I think. आपने गलत लिख लिया है. Okay. बाकी लोग देखो भाई जरा. ये चीज याद रखने के लिए चेक करना. बाकी लोग भाई बताओ जरा. RB to RA. RB to RA. Yes, sir, I have written. Oh, sorry. ये याद रखने के लिए यू कैन सी दिस. हाँ, तो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. Rho A square by 2 epsilon naught ln B by A plus rho A square by 4 epsilon. आदित्य बताओ फिर से, एक मिनट, धीरे धीरे.
वी बी माइनस वी ए निकाल रहा हूं ना। EO ये कितना आ रहा है? rho a square by 2 epsilon naught ln b by a. VB minus V0 is rho a square upon 2 epsilon 0. टू epsilon naught 0 ln b by a. half plus ln b by a. सॉरी सर ब्रैकेट में मेरा आ रहा है हाफ प्लस ln b by a. यहाँ पे ln आएगा और यहाँ a स्क्वायर आएगा, राइट? यस सर. तो कितना आ रहा है आपका? हाफ प्लस ln b by a. b by a। और अगर वी ए माइनस वी जीरो निकालें तो ये जरा अच्छे से नोट कर लेना। देखो लीनियर का फॉर्मूला पता था और मैंने रो का अपने आप लिख लिया, जस्ट सिंपल से कॉन्सेप्ट से। इफ आई गेट वी ए माइनस वी जीरो देन only one formula will be used. Minus rho a square by 4 epsilon 0. Minus rho a square by 4 epsilon 0. सही से किया है? Which one you have used? The electric field profile. E1 or E2? E2. E2. And if I want VB minus VA, then subtract this. What you will get? This is 4, na? If you subtract, what you will get? Rho square by 2 epsilon naught. Yes, sir. And plus ln B by A. Sir, into rho a square by 2 epsilon 0 होगा. साइन का थोड़ा सा इसका जो माइनस साइन था वो हमने हाँ सर, माइनस साइन आएगा, मेरा तो आ रहा है VB माइनस V0 में माइनस रो a स्क्वायर अपॉन 2 हाँ आ रहा है हाँ मेरा। ये माइनस साइन शायद ध्यान नहीं दिया इन्होंने। यहाँ माइनस आ रहा है ना? मेरा तो आ रहा है सर। ये V0 माइनस VB हमने जो लिमिट लगाई थी B2A फिर A2 0। नहीं मैंने वी बी सर माइनस हो जाता है जब भी V0 माइनस VB। वी बी माइनस वी जीरो है ना? सर नहीं V0 माइनस VB माइनस VB लिमिट RB2 RA आई थी R0। ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? सर V0 V0 माइनस minus VB। VB. V0 माइनस VB। तब माइनस साइन नहीं आएगा सर V0 minus VB में। सर V0 माइनस VB में माइनस साइन नहीं आ रहा है। अच्छा तो अभी तो ठीक है ना? VB माइनस V0 में आ जाएगा ना माइनस साइन? हाँ ठीक है सर, अब ठीक है सर। मैंने जो बोला था वो V0 माइनस VB सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ। So now it is okay. And if you subtract, then what will happen now?
सर ये जो रो ए स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा और ln पार्ट नहीं नहीं कटेगा नहीं। जस्ट 1 सेकंड, एक बार पूरी चीजों को देखना होगा। कोई ठीक है, तो 0 to A and A to B, ये जरा कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, VB माइनस V0। सर माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में रो ए स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन 0 रो माइनस माइनस रो A स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हाँ इन माइनस ब्रैकेट, नहीं माइनस तो पहले ही ले लिया ना, ओके ओके ठीक है सर 1 प्लस 2 ln b बाई ए। हाँ बिल्कुल सही, 2 ln B by A। ये VB माइनस V0 की वैल्यू हो गई। ये सब लोग देखो जरा ध्यान से, और कोई डाउट है तो पूछो। तो अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए तो कितना है, कितना है? और अगर A और 0 के बीच का कहा जाए तो A और 0 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो वो कितना होगा? व्हाट विल बी दैट? minus rho a square by 4 epsilon माइनस रो ए स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन माइनस रो A a square स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो कितना होगा? सर माइनस रो ए minus rho स्क्वायर s बाई 2 एप्सिलॉन My, log of b by a। no, you will put VB this minus that ना। yes sir, coming that only minus rho of a square upon 2 epsilon naught ln of B by A। अरे when you will subtract this ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो रहा है, लेकिन बीच के जो टर्म्स है वो उसमें माइनस है ना सेकेंड टर्म में, हम्म तो वो रह जा रहा है। वो तो रही जाएगा। So it will become minus rho माइनस रो ए स्क्वायर A बाय 4 square by 2 epsilon naught ln b बाई ए। ln B by A। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नीचे का दिख नहीं रहा है ना? नहीं दिख रहा है। ठीक है सर ओके वेरी नाइस। तो इसको एक बार फिर से भी देखना, कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस अगेन।
सर इसमें VA बड़ा है VB से पोटेंशियल। हाँ, नेगेटिव आ गया ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, राइट? यस सर। A thick spherical shell a thick spherical shell of charge density rho is equal to K by R square from A to B. Find the potential at the center find the potential at the center taking infinity as reference potential. Taking infinity as reference potential. So you have a shell and this radius is A, this is B, this is 0. So you have to come from infinity. अब देखो फिर से, you have to come from infinity to B. no O. Oh. So it will be broken down into infinity to B, B to A, and A to 0. And this is the region where you have charge density K by R square, correct? Is it okay? So finally you have to calculate V0 minus V infinity, which is minus infinity to 0 E dot dr. Yes? So it will be minus infinity to B E dot dr plus B to A E dot dr. Right? Yes, sir. देखते रहना भाई. So infinity to B field की प्रोफाइल कैसी होगी? K by epsilon 0 R square B minus है. हम लोगों ने निकाला भी हुआ है ना पहले? Yes, sir. Gauss law use करके. Gauss law use करके. So you can again use 0 to infinity is equal to minus infinity to B. What is the profile? K? By Use Gauss. epsilon 0. K by epsilon 0 R square B minus है.
k by epsilon 0 r square b minus a. This was the profile into dr. ऐसे नहीं होगा? No. Let me calculate. If I want field profile here, I will draw a Gaussian surface and we will get field as E into 4 pi r square is equal to 1 by k r epsilon square by naught 4 pi epsilon naught integral square. a to b and k by r square into 4 pi r square dr. So r square cancel. So 4 pi cancel. So E will become k by epsilon naught r square b minus a ना? Yes, sir. ये बन जाएगा. This we have done. Gauss law. So it will become minus integral b to infinity to b k b minus a by epsilon naught r square and dr. This is the first term. For second term, we need field here, right? तो गॉस लॉ यहाँ लगाना पड़ेगा. ये पहले गॉस लॉ में मैंने बताया हुआ है आपको कैसे हैंडल करते हैं. तो इसकी प्रोफाइल कैसी होगी? माइनस k by epsilon 0 r square r minus a. माइनस इंटीग्रल b टू a k बाई इसका r R minus माइनस a. एंड dr. बस ये कर लो. दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. करके देखो कितना आता है. चेक करना. इसमें तो सब कांस्टेंट ही है. इंटीग्रल क्या हो जाएगा? -1/r विल बी द इंटीग्रल. इन दिस यहाँ पे पहला टर्म 1/r, दूसरा टर्म -a/r स्क्वायर. 1/r स्क्वायर का क्या होता है? -1/r एंड 1/r का log r. तो वही log यहाँ बच रहा है. चेक करो जरा फटाफट. डू इट. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और लोग भी करो जल्दी से. परमप्रीत देखो आ रहा है. हर्षित सर आ रहा है. कर रहा हूँ. फाइनल आंसर क्या आ रहा है? Okay. आ रहा है. नहीं सर, कुछ तो मिसिंग हो रहा है मेरा. किसी का आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये
गॉस थ्योरम तो फटाफट यूज समझ आओ. You have to be very very quick in just writing the field, and once you know the field you can write the potential difference. तो सबको समझ आया कैसे चलते हुए आते हैं. देखो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. If you understand this, that you have to come from infinity to zero, but if there is difference in profile, you have to break the limits, which is normal calculus. And from a to 0 field is 0, so that's why this will not contribute. Okay. चलो बाकी चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू सर. ओके सर, थैंक यू सर. एक बार देख लेना अच्छे से कि कोई डाउट होगा तो वी कैन डिस्कस अगेन आल्सो. ओके, इफ देयर इज एनी डाउट एट एनी स्टेप. थैंक यू सर. Potential everybody should learn. Okay, potential is very very important. Calculation of potential difference. Okay.